Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. The topic that we are going to cover today is prime factorization. What is prime factorization? Now, before we start prime factorization, let's recall what are factors. Let's say I have a number 8. 8 can be completely divided by 1. 8 can be completely divided by 2. 8 can be completely divided by 4. And 8 can be completely divided by 8 itself. These four numbers जिनसे 8 completely divide हो जाता है, which means answer हमें whole number में दे देता है, these numbers are called factors of 8. Now, we can write 8 as a product of its factors. Now, what does that mean that we can write 8 as a product of its factors? Let's say I have number 8. I can write 8 as 1 multiplied with 8. So 8 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है. We can write 8 as 1 into 8. We can also write 8 as 2 into 4. Now this particular thing, writing a number as a product of its factors is called factorization. किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. नाउ यू कैन से कि जी 8 को हम 2 + 2 + 2 + 2 भी तो लिख सकते हैं. नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट, यस वी कैन राइट दिस, but we are talking about as a product of. Now in mathematics, product means multiplication, right? So as a product of its factors, हम 8 को लिख सकते हैं as 2 into 4. Now I can further write it like this. 8 is equals to 2 into 2 into 2. 8 is equals to 2 is a 4, 4 into 2 is 8, right? Let's understand each case individually. In this case, I have a special number and I have a composite number. In this case, I have a prime number and I have a composite number. But in this case, I have prime number, prime number, prime number. Any number when written as a product of its factors and all the factors are prime numbers, that particular way of writing number is called prime factorization. These are factorization, but this is called prime factorization because we are only using prime numbers to write a particular number. I hope prime factorization का basic बिल्कुल समझ में आ गया होगा. Now let's say I have a number 80 and I want to write 80 as a product of its prime factors, which means I want to do prime factorization on 80. How am I going to do that? Well, I have a method called tree method. I can write 80 as 2 multiplied with 40. Now 2 is a prime number, the most smallest prime number possible. We will use the most smallest possible prime number. As 80 is an even number and therefore I am using 2 because 2 is the smallest prime number. Now I have a number here 40. I can further factorize 40 and I can say 40 becomes 2 multiplied with 20 and this 2 taken as it is. 20 into 2, 40, 40 into 2, 80, right? Again, I have a number here 20. Now these two are prime numbers, but this one is not prime number. I'm going to factorize it further. And I'll say 2 into 10. Again, why am I using 2? Because it is an even number. As long as I can use the smallest possible prime number 2, I will use it. जब 2 पॉसिबल नहीं होगा यूज करना तो फिर मैं 3 चेक करूंगा. जब 3 पॉसिबल नहीं होगा देन आई लुक फॉर 5. अगर 5 पॉसिबल नहीं होगा देन आई लुक फॉर 7. अगर 7 पॉसिबल नहीं है देन आई लुक फॉर 11. बट अगर 2 पॉसिबल है तो आई विल यूज 2.
this 2 taken as it is and this 2 taken as it is. प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली बात है सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा. 10 into 2 is 20, 20 into 2 is 40, 40 into 2 is 80. But again, we have 10 here. We will further factorize 10 and we'll say 2 into 5. 2 into 5. Now, this 2 written as it is, this 2 written as it is, and this 2 written as it is. Let's see. 5 into 2, 10. 10 to the 20, 22 is 40, 40 into 2 is 80. So I can say 80 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 5. This is called prime factorization of 80. 80 written as a product of its prime factors. You can see 2 is a prime number, 2 is a prime number, again prime number, again prime number, and 5 is also a prime number. When anything is written as a product of its prime numbers, remember, इसके बाद उसको further हम factorize कर ही नहीं सकते. 5 को further factorize नहीं किया जा सकता prime numbers के उसमें. 2 को further factorize नहीं किया जा सकता prime number. You can write 1 into 5, but again, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे ना, फिर वो प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए हम इससे ज्यादा नहीं फैक्टराइज कर सकते. सो व्हेन एनीथिंग इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, दिस मीन कि उसके अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और उसके बाद उसमें फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. राइट नाउ दिस मेथड एक्चुअली लुक्स अ लिटिल इनकन्वीनियंट बिकॉज अगेन यहां तो 80 नंबर है. इफ आई गेट 2000, I get a big number, 1560. How am I going to do that using this method? So, inconvenient होने की वजह से we will use another method, and that is, we'll do like this. As this is an even number, I will divide 80 by an even number, 2. The smallest possible prime number that can be used to divide 80. I get 2 4 times is 8, 0 taken as it is. Again, as it is a even number, I'll again take 2, the smallest possible prime number. 2 2s are 4, 0 taken as it is. Now again, it is an even number, so I'll use 2 and I'll divide 20 by 2. 2 1s are 2 and 2 0 taken as it is. Now, again, as it is an even number, 2, 5 times is 10. 2 4s are 8, तो मैंने 4 लिख दिया, 0 का as it is ले लिया. 2 times is 4, मैंने 2 ले लिया, 0 का as it is लिख दिया. 2 10s are 20, तो 10 ले लिया. 2 5s are 10. Now, 5 can only be divided by 5. 5 divided by 5 is 1. Whenever I get 1 at the end, I have completed my prime factorization. Remember, use सिर्फ prime numbers ही करने हैं and smallest possible. 5 के लिए मैं 3 नहीं यूज कर सकता था, तो मुझे 5 ही यूज करना पड़ा. I can say 80 written as a product of its prime factors is 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 5. This method is more convenient and हम अपने बहुत बड़े बड़े नंबर्स को भी इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इजीली इसको फैक्टराइज करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन फर्स्ट. आई नो आप में से इसमें बहुत सारों को इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल दिस सिस्टम इजीली. तो उसको समझ लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट विद अ डिवीजन मेथड. मैं इसमें डायरेक्ट आपको बताता हूं कि इधर किस तरीके से हमने इसको हैंडल करना है. नाउ द नंबर दैट वी आर गोइंग टू यूज, द प्राइम नंबर दैट वी आर गोइंग टू यूज टू डिवाइड 1728, वो हम यहां लिख देंगे. लेट्स से इट इज एन इवन नंबर ना, क्योंकि इसमें 8 एट द एंड आ रहा है और हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 स्टडी किया था. व्हेनेवर वी हैव एन इवन नंबर इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. तो अगर 2 से हो रहा है तो हम कोई और नंबर तो यूज करेंगे ही नहीं. जिस नंबर से इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है वो 2 है, तो आई रोट इट 2 here. Now
मुझे इसमें ना एट अ टाइम एक डिजिट को लेकर चलना है, राइट, वन डिजिट एट अ टाइम, वन, आई टेक दिस वन। अच्छा, यहां पे जो हमारा टास्क है ना वो क्या है कि मैं 2 का टेबल रीड करूंगा, राइट। मुझे या तो उस नंबर के इक्वल आ जाना है, लेट्स से इफ आई हैव 8 और मैं 2 का टेबल रीड कर रहा हूं तो मैं 4 टाइम्स करता हूं तो 8 आ जाता है, तो या तो मैं 4 टाइम्स कर लूं, लेकिन अगर मेरे पास 7 है, नंबर 7 है, तो व्हाट विल आई डू? उस सिचुएशन में आई टेक इट टू द क्लोजेस्ट वैल्यू, 2 3 टाइम्स इज 6 बिकॉज आई हैव 7, तो मैं उसके लिए 6 तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर 8 आ जाएगा तो हम नहीं उसको सॉल्व कर सकते। सो आई टेक इट टू द क्लोजेस्ट वैल्यू पॉसिबल, राइट। नाउ लेट्स सी हियर, आई हैव अ 1। नाउ अगर मैं 2 के टेबल को स्टार्ट करूं तो 2 1 इज 2, ये तो 1 है, यहाँ तो मिनिमम ही 2 रिक्वायर्ड है। ऐसी सिचुएशन में मैं इसके साथ वाले नंबर को इसके साथ सॉल्व करता हूं। हाउ आई डू दैट? मैं इधर एक 0 ऐड करता हूं, अपने एंड से तो नहीं, एक्चुअली होता ही है, उसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, राइट। मैंने 0 यहां पे लिख दिया। नाउ आई कैन टेक 17 एज होल, क्योंकि वो रिमाइंडर क्या है तो वो 2 के साथ एज इट इज यूज किया जाएगा। 2 6 टाइम्स इज 12, 2 6 टाइम्स इज 12। रिमाइंडर क्या रहा? कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, तो वील यूज नेक्स्ट 8। 2 4 टाइम्स इज 8। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहां पर एक 0 लिखा हुआ है और उसकी यहां पर जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट। व्हाई? व्हाट इज दिस नंबर? इट इज कॉल्ड 2। एंड व्हाट इज दिस नंबर? इट इज अगेन 2। व्हाट इज दिस नंबर? इट इज 2। सो होल नंबर से पहले, 2 से पहले के जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी जीरोस हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। दैट्स व्हाई वी डू नॉट राइट दिस एंड वी सिंपली टेक 17 इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये याद रहे, आगे जाकर अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हमें नेक्स्ट डिजिट को साथ में उसके यूज करना है, तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज इधर तो ठीक है लेकिन इधर तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 20 हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी अगेन हियर, लेट्स सी, दिस इज 4 in the end, which means it is an even number, तो 2 as a prime number यूज किया जा सकता है। 2 4 times is 8, 8 से 8 माइनस किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। 2 3 times is 6, 6 से 6 को माइनस किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। 2 2 times is 4, 4 से 4 को माइनस किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। लेट्स डू इट अगेन। I'll use 2 because it is an even number. 2 times is 4, 4 minus 4, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। 2 1 times is 2। अगर मैं 2 से करूंगा तो वो तो 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मुझे वो क्लोजेस्ट लेना है ना, 1। 2 1 times is 2, 3 में से 2 माइनस किया, रिमाइंडर रह गया 1, 1 इधर आ जाएगा। एंड नाउ वी हैव 12, सिर्फ 1 नहीं यूज करना, 12 को एज इट इज पूरा यूज करना है। 2 6 टाइम्स इज 12, राइट। नाउ अगेन इट इज एन इवन नंबर, तो मैं 2 ही यूज करूंगा। 2 1 टाइम्स इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। अब इस डिजिट को लेते हैं 1, 2 1s are 2। अभी ये 1 छोटा हो गया, हमें या तो 2 या उससे बड़ा नंबर होता तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, लेकिन नाउ आई नीड दिस 6 विथ 1, मुझे 6 को साथ यूज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक 0 ऐड करना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना मतलब प्लेस करना है, और अब मैं 16 को यूज कर सकता हूं। इस सिचुएशन में जब रिमाइंडर आगे गया था तो हमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बट नाउ बिकॉज आई नीड 6, जो कि अगला नंबर था, डिजिट था, उसको यूज करना, तो मैंने यहां पे 0 प्लेस किया। नाउ आई कैन यूज 16 एज अ होल। 2 8 टाइम्स इज 16, 2 8 टाइम्स इज 16। नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर। 2 1 यूज करना है, नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, एक 0 इधर लिखूंगा
और उसके बाद मैं 10 को एज इट इज यूज कर सकता हूँ, बट उस 0 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट. 2 5 times is 10 and 2 4 times is 8. Again, even number. 2 times is 4, 5 में से 4 माइनस किया, 1 रिमाइंडर, 1 यहां आ गया, रिमाइंडर के साथ यूज करेंगे, इसके लिए 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है. 2 7 is 14. नेक्स्ट, अब ये 2 से नहीं हो सकता फर्दर बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर नाउ. लेकिन याद रखिए 7 + 2 is 9 और 9 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, अगर 9 डिविजिबल है तो 27 भी डिविजिबल है. तो we'll use 3. The next possible smallest prime number, 3 9 is 27 and 3 is a 9 and 3 1 is 3. Now I have got 1 in the end, so the answer is, तो हमारी factorization जो है वो complete हो गई है. I'll write 1 7, I'll write it here, let's say 1728 can be written as a product of its prime factors as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 times 2, 6 times 2 and 3 times 3. This is the solution to our question. Now, suppose यहां पर तो हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है, बट इट सेज गिव द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन. तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रिंग है ना, तो हम 2 का सेट बना लेंगे, 2 का ग्रुप है और 3 का, एंड आई विल से 2 raised to the power 6 into 3 cube. So 1728 written as a product of its prime factors, 1728 written as a product of its prime factors in index notation. That's it. I hope it is clear. और ये method अब आपको आ गया होगा. Okay, so let's practice the most common questions that we see related to prime factorization. Let's say 6804 written as a product of its prime factors is 2 raised to the power x into 3 raised to the power y into z. Find the values of the unknown. Now, with this means that 2 has been used multiple times, और कितने times use हुआ है वो हम find out करेंगे. 3 again उसका index y है, which means it has been used multiple times. कितने times we'll find it, and z is the number जो कि use हुआ है for prime factorization, and we will see that number. Find the values of the unknown. इन तीनों unknowns की value find out करनी है. So what we do is we perform the prime factorization. As it is an even number, I'll use 2. 2 3 times is 6, 2 4 times is 8, 0 as it is, and 2 times is 4. Now again, it is an even number, so I'll use again 2. 2 1 times is 2, 3 minus 2 is 1 remainder, 2 7 times is 14, 0 as it is, and 2 1 times is 2. Now this is not an even number, it's an odd number, so I'll try applying divisibility test of 3. 1 plus 7 is 8 and 8 plus 1 is 9. 9 is completely divisible by 3. That means 1701 is also completely divisible by 3. So I'll use 3. 3 5s are 15. Closest 5 ही है, वरना फिर 18 हो जाएगा 3 6 से, तो वो नहीं यूज करेंगे. 3 5s are 15. 17 minus 15, 2 remainder, 2 इधर आ गया. And now I will use this 20. 3 5s are 15. 3 6s are 18. Again 2 remainder, that is here. 3 7 is 21. Now let's apply divisibility test of 3 again. 5 plus 6 11, 11 plus 7 18. 18 is divisible by 3, that means 567 is also divisible by 3. We'll use 3 again. 3 1s are 3, remainder is 5 minus 3 2. Now we will use this 26. 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9 is 27, वो बड़ा हो जाएगा, so we will use 8. 3 8 times is 24. 26 minus 24, 2 remainder, that will be here, written here. 3 9 times is 27.
Let's apply, again it is an odd number, so we'll apply divisibility test of 3. 9 plus 8, 17, plus 1, 18. Again 18 is divisible by 3, so 189 is also divisible by 3. 3 5s are 15, 3 6 are 18, complete आ गया ना, तो 18 as it is use कर लेंगे. 3 6 are 18 and 3 3s are 9. Again 3 2s are 6 and 3 1s are 3. 3 7 times is 21 and 7 is a prime number, so 7 सिर्फ 7 से ही divide होगा. 7 1s are 7. So we can say 6804 written as a product of its prime factors is 2 into 2, and then they have 1 2 3 4 5 times 3, 1 2 3, and we have 1 7. Let's convert it into index notation, group of 2, group of 3 and 7. So 6804 written as a prime factor, as its prime factors in index notation is 2 square multiplied with 3 raised to the power 5 multiplied with 7. Now 2 raised to the power x, 2 raised to the power x is 2, therefore the answer to x is 2. 3 raised to the power y, and y is 5, and z is 7. I hope it is clear. So another very important question regarding prime factorization, जहाँ prime factorization को use किया जाता है, is like a student uses 630 1 centimeter cubes to make a cuboid. Each side of a cuboid is longer than 2 centimeter. Find any 3 possible dimensions of the cuboid. Now, first you need to understand कि cube and cuboid होते क्या है. Well, इतना ज़्यादा description में नहीं जाएंगे, ये आगे के topics हैं, but I'll give you a small summary. Square के अगर हम prism को use करें तो वो बनता है cube, और अगर हम एक rectangular prism को use करें तो that becomes cuboid, which means एक स्टूडेंट ने इस तरह के क्यूब्स जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है एंड हाइट 1 सेंटीमीटर है, इस तरह के उसने 630 क्यूब्स यूज किए हैं और उनको एक साथ प्लेस करके उसने एक क्यूबॉइड बनाया है. नाउ क्यूबॉइड किस तरीके से उसने बनाया है? पॉसिबिलिटीज आर उसने इस तरह से क्यूबॉइड बना लिया हो, मे बी पॉसिबल उसने थोड़ी सी ब्रेथ ज़्यादा रखी हो, लेंथ कम रखी हो क्यूबॉइड की, मे बी पॉसिबल उसने लेंथ बहुत कम रखी हो, ब्रेथ बहुत ज़्यादा रखी हो, हाइट बहुत ज़्यादा रखी हो. उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं उन 1 सेंटीमीटर की क्यूब्स को प्लेस करने के, लेकिन बनेगा एक क्यूबॉइड, विच मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट वैल्यूज से आएंगी ना. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बट उसने हमसे कहा है फाइंड एनी 3 पॉसिबल डायमेंशंस, विच मीन्स कि भाई इन 3 के डायमेंशंस फाइंड कर लो, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है एंड height कितनी है. So for this what we will do is we will perform prime factorization of 630. So let's start. Even number we'll use 2, 3 times is 6, 1 times is 2, 1 carried, remainder 2, 5 is 10. Now 5 is, this is not an even number, so we cannot use 2. Let's try divisibility test of 3. 5 plus 3 is 8 plus 1 is 9. Definitely 9 is divisible by 3. So 3 1 5 is also divisible by 3. 3 1 times is 3.
Now I want to use these 15 together, तो मैं 0 इधर place करूंगा and 3 5 times is 15. Again 5 plus 1 is 6. Divisibility test of 3 pass हो रहा है. 3 is a 9 and 1 remainder 3 5 is 15. Now 5 plus 3 8. 8 3 के टेबल में नहीं आता तो 35 8 3 से divisible नहीं है, but it has a 5. Divisibility test of 5 pass हो रहा है. So we'll use 5. 5 7s are 35 and 7 1 is 7. 1 आ गया, so हमारी prime factorization complete हो गई. Now the let's remove this. (630) written as a product of its prime factors is 2 into 3 into 3 into 5 into 7. हमारे पास क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ मल्टीप्लाइड विद हाइट. अब हमने इन नंबर्स को यूज करके लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड की करनी है, पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है, बट कंडीशन इज ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर, विच मीन्स कोई भी इनमें से 2 नहीं हो सकती, 2 से बड़ी होनी चाहिए है. सो पहली पॉसिबिलिटी मैं ये देख लेता हूं. लेट्स से आई विल कंसीडर दिस लेंथ and I'll consider this breadth and I'll consider this height. That is first possibility. 2 3 6 into 3 into 7 into 5 7 5 is 35. एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी लेंथ ब्रेथ हाइट. लेंथ हमारी 6 है, ब्रेथ हमारी 3 है और हाइट हमारी 35 है. लेट्स टेक सेकंड पॉसिबिलिटी. I'll say this becomes my length, breadth and height. Obviously सारे 2 से बड़ी हो गए ना. 2 into 3 6, 6 into 3 18. Length, breadth, height. Let's take the third possibility. In this case, I'll take 7 and 2 together. If you remember, I told you multiplication में अगर position repositioning कर दी जाए, end result पे कोई effect नहीं होता. So length is 7 into 2 14, and I'll take this 3 as breadth 3 and this as height. 5 into 3 is 15. So these are the 3 possible dimensions of a cuboid. Now इसके अलावा भी possibilities हैं, but the question said find any 3 possible dimensions. So हमने कोई भी 3 possible dimensions उसको बता दी, right? This is where you can use prime factorization to find out the value of dimensions of a cube. I hope अब आपके पास बहुत सारी knowledge आ चुकी है इस topic से related. Now open your books, इंटरनेट से जाके सर्च कर दें questions, other sources जो आपके पास हैं that you can use and practice these questions, practice prime factorization. I hope it is clear. We'll meet you in the next video with another topic. Till then, take care.